Hello and Assalamu alaikum. I'm Raja Furqan Tariq, roll number 23I6152, a student at Fast News Islamabad. Our digital logic design project is about tic-tac-toe game, and I'm the group lead of our project collaborating with Zuhaib Gohar and Ehsan Islam. So, first of all, I would like to give you guys an overview of our project, which includes about the details regarding tic-tac-toe game. Tic-tac-toe is a simple yet strategic two-player game played on a 3x3 grid where players take turns placing X's and O's. But instead of using traditional pen and paper, we built it using digital circuits and LEDs. We use different colored LEDs to represent each player's moves, making it more interactive and visually clear. Although the game may seem simple, its implementation required us to apply both combinational and sequential logic. We worked with input signals. First of all, we store and update the game state. We relied on sequential, and to do so, we relied on sequential circuits throughout the system, specifically using D flip flops, XOR gates, AND gates, and a finite state machine (FSM) was implemented to control the sequence and manage the overall game flow. Everything was synchronized with the help of clock cycles so that updates occurred only when players made valid moves. Combinational logic was responsible for checking the game states such as detecting wins or draws. Sequential logic, on the other hand, handled updates to the board and managed player turns. For inputs, we used physical buttons that players pressed to make their moves, and for outputs, LEDs were used to visually indicate board state changes and to show the winner once the game ends. Assalamu alaikum everyone. My name is Zohaib Gohar and I'm studying at FAST Islamabad. This is my fourth semester's DLD project, and basically I'm taking over the Proti simulation of the tic-tac-toe game from here. So I'll try to keep this as short as simple. And basically, what's happening in this is that to understand the deep technicalities of this project, we first have to understand what is our project. A tic-tac-toe game compromises of 3 by 3 matrices. That means we have 9 cells, yeah, 9 blocks, and each cell will have the same operation that has been happening. And you can see, if you can see a pattern being formed. Abhi to filhal, the circuit might look really complex, really untidy, but if you actually look at it from an angle that each cell has the same operation that is being repeated, redundant है basically. तो एक सेल में हो क्या रहा है, काम क्या है, तो बेसिकली एक्स एंड ओज को तो हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं कर सकते सर्किट्स में. सो वी डिड द ट्रिक बाय रिप्लेसिंग इट विद टू डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी बल्ब्स. ये आपको, आई डोंट नो इफ आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, बट यहाँ पे ये जो दो एलईडीज हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2. So then we have three D flip flops. The leftmost D flip flop has is getting its clock input from the push button, and it also the leftmost D flip flop का D is always equals to 1 या 5 volts, right? तो इससे होता क्या है कि अगर तो आपका Q, आपका क्लॉक आपका 0 है, तो फिर तो आपका स्टेट रिटेन हो रहा है. अगर आपका Q 1 है, तो फिर ऑब्वियसली जो D की वैल्यू है वो वही आपकी डेटा होगा. तो इसी काम में ये हर ब्लॉक में वही काम हो रहा है कि 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं. पहले डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बाकी 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हैं, उसको अल्टरनेट कर रहे हैं. एंड देन एट द एंड यू कैन सी ओवर हियर कि देयर आर दीज मल्टीपल ज़ोर गेट्स यहाँ पे. व्हाट दिस इज डूइंग बेसिकली, इसका काम यहाँ पे ये है कि इट इज़ अल्टरनेटिंग द प्लेयर रोल्स. बेसिकली कि प्लेयर 1 जब अपनी बारी कर ले तो ऑटोमेटिकली प्लेयर 2 की बारी वो हो. So the next move that will be made, green LED जलेगी. Next move will be made, red LED जलेगी. इसलिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा NOT gate भी नजर आ रहा होगा. So this, in retrospect, is what our project is fundamentally doing, and I hope you understood. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और ये हमारा डीएलटी का प्रोजेक्ट है टिक टैक टो बेस्ड ऑन डिफरेंट आईसीज एंड लॉजिक गेट्स एंड आई एम गोना शो द बेसिक स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट. सो बेसिकली जो मेन आईसीज हमने यूज़ किए हैं इसमें डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं, जोर गेट्स यूज़ किए हैं और एंड गेट यूज़ किए हैं. तो इसकी वर्किंग समझने के लिए लेट्स से कि टिक टैक टो पेपर में इस तरह नज़र आता है इस तरह टिक एंड क्रॉस. तो देयर इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स और सेम आइडिया हमने इधर इम्प्लीमेंट किए 3x3 का मैट्रिक्स और 9 पुश बटन्स हमने यूज़ किए. और इस पुश बटन की ख़ास बात यह है कि
लेट्स से कि मैं जब ये प्रेस करूँगा तो एक बारी ये रेड बजाएगा, लेकिन अगर मैं अल्टरनेट बारी करूँगा तो यही ग्रीन बजाएगा, जो कि हमने पहले डिफरेंट पुश बटन्स किए हुए थे, 9 + 9 18 किए हुए थे। अच्छा, जो मेन इशू हमें इस प्रोजेक्ट के लिए आया था वो ये था कि पेपर में तो लेट्स से कि अगर प्लेयर 1 इधर बारी करता है तो प्लेयर 2 इधर सेम टर्न नहीं कर सकता, जो कि चीटिंग के साथ है। वो चीज़ इधर इम्प्लीमेंट करना थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसमें ये होता था हमारा कि लेट्स से अगर मैं ये एलईडी ऑन करता हूँ जो कि ग्रीन हो गई है, तो अगर मैं दोबारा इधर ही प्रेस करूँ तो वो रेड हो जाती थी। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होता, दोबारा दबाऊँ ना, मैं दबाता रहूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंट की है वो डी फ्लिप फ्लॉप से हमने की है। बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप करता क्या, जब हम उसे पुश बटन देते हैं और उसकी इस इनपुट को हमने लॉजिक 1 पे सेट किया हुआ है, तो जब हम उसकी क्लॉक लॉजिक 1 करते हैं तो वो एक बिट स्टोर कर लेता है, और जब भी हम नेक्स्ट टर्न करते हैं तो वो पिछली बिट को देखते हुए कंडीशन बनाते हैं कि लेट्स से कि अगर इवन कंडीशंस हैं तो किस प्लेयर की टर्न है, ऑड कंडीशंस है तो किस प्लेयर की टर्न है। तो ये जो मेन इशू था ना वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप से ही कवर हुआ है। तो लेट्स से कि अगर मैं कहीं भी बटन प्रेस करूं, लेट्स से मैं इधर करता हूं तो ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, और मैं कहीं और प्रेस करूं तो ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। बेसिकली ये अल्टरनेट एलईडीज़ को ना ऑन स्विच करेगा, जो कि डी फ्लिप फ्लॉप ने हल तो कर दिया, लेकिन उस वजह से जो हमारा सर्किट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मैसी बन गया। लेट्स से कि अगर मैं इधर करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, और मैं कहीं और करता हूँ, लेट्स से इस एलईडी को ऑन करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसको करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और ये हो रही हैं सारी हमने डी फ्लिप फ्लॉप की वजह से की है, क्योंकि वो जो एक बिट स्टोर करते हैं ना उस बिट को हम डिफरेंट ज़ोर गेट्स में डाल के ना इवन ऑड कॉम्बिनेशन से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी एलईडी ने लाइट अप करना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।